शादियों का सीजन आ रहा है एंड माई मेल बॉक्स इज फिल्ड विद वेडिंग इन्विटेशंस। हम इंडियंस अपनी शादी पे इतना खर्चा करते हैं कि अगर 2 से 3 साल की शादियों को कंबाइन करके हम उनके पैसे निकाल लें तो एक जीडीपी तो बन ही सकती है किसी कंट्री की। मजाक कर रही हूँ, बट सोचने वाली बात यह है कि यू स्पेंड सो मच मनी इन योर वेडिंग और रिटर्न गिफ्ट में आप 1100 रुपये का लिफाफा लेके खुश हो जाते हो। बट वॉट इफ आई टेल यू दैट यू कैन अर्न मनी आउट ऑफ योर ओन वेडिंग? हाँ, पॉसिबल है। मैं बताती हूँ कैसे। फर्स्ट चेक आउट द गवर्नमेंट स्कीम्स इन योर स्टेट। मतलब अपने स्टेट में गवर्नमेंट स्कीम्स को चेकआउट करो, बिकॉज देर आर सो मेनी स्कीम्स सेंट्रली एंड स्टेट वाइज दैट कैन गिव यू फाइनेंशियल एड इफ यू आर एलिजिबल एंड दैट इज फॉर योर वेडिंग। पहला है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ये स्कीम आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक अगर आप अंडर प्रिविलेज फैमिली से हो इन मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड और आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हो। सेकेंड है डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिजेस। अगर आपकी इंटरकास्ट मैरिज हो रही है और आप में से एक शेड्यूल कास्ट से हैं तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू फाइनेंशियल एड ऑफ 2.5 लाख रुपीज़। ऑल यू नीड टू नो इज़ कि आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर आप रजिस्टर्ड हो, आपकी पहले कभी शादी नहीं हुई है, मतलब ये आपकी पहली शादी है और आप इसको 1 साल के अंदर अंदर आपकी शादी के अप्लाई कर रहे हो। 1.5 लाख रुपीज़ जो है आपके जॉइंट बैंक अकाउंट में आएगा और बाकी का इन्वेस्ट हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट में 3 साल के लिए, जो आपको इंटरेस्ट भी देगा। दिस इज़ अ सेंट्रलाइज स्कीम बट मैनी स्टेट्स हैव देयर ओन स्कीम्स फॉर इंटरकास्ट मैरिजेस। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ऑफर करती है 10 लाख रुपए अगर आप अपनी कास्ट से बाहर शादी कर रहे हो अंडर सावित्री बेन अम्बेडकर स्कीम, जहाँ पे एक स्पाउस को शेड्यूल कास्ट से होना ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि टोटल इनकम जो है कपल की वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एज जो है 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट कोई नहीं होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली यू ऑल्सो नीड टू बी अ रेजिडेंट ऑफ राजस्थान। For Muslim girls, if you have completed your graduation before your marriage, तो शादी शगुन स्कीम के अंडर आपको फाइनेंशियल एड मिलेगा 51,000 रुपीज़ का। For persons of disability in Maharashtra, eligible couples get 50,000 rupees in financial aid funded by the state government. Eligibility ये होगी कि वाइफ और हस्बैंड दोनों डिसेबल्ड हैं with 40% disability और डोमिसाइल है आपके पास महाराष्ट्र का। Other states also have their own schemes for marriages like mass marriage scheme in UP, कल्याण लक्ष्मी स्कीम इन तेलंगाना, विवाह सहायता योजना इन MP and many other schemes. Some states also provide financial assistance to various categories of people जैसे कि widows, divorced, orphans and some other people as well. And there are also schemes for girls from economically weaker families. So check out these schemes and apply if you are eligible. And if all this sounds like too much work for you, then you can also jump into this new trend जहाँ पे आप फॉरेनर्स को अपनी शादी में इनवाइट करते हो एक टिकट प्राइस पे और आप अपनी शादी में पैसे कमा सकते हो। ये एक ऑस्ट्रेलियन स्टार्टअप ने स्टार्ट किया था इस ट्रेंड को, सो यू कैन चेक दिस ऑप्शन आउट टू। थर्ड, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लेट योर वेडिंग गिफ्ट्स मेक मनी फॉर यू। As per the section 56(2) of the IT Act 1961, any gift from a relative or immediate family is not taxable, and as for wedding gifts, gifts received on the day of the wedding are not taxable. Remember, it is not applicable for engagement or other ceremonies. If you fail to meet these criteria, any amount exceeding 50,000 rupees will be taxable. You also need to preserve the record of gifts and their values. So if you get gold or silver jewelry at your wedding, it is like an investment and it is only going to grow over the years. So you can invest all of this money or whatever the wedding shagun you're getting into a mutual fund or a retirement plan or a pension scheme to avail returns out of your wedding gifts. However, if you're receiving cash, there is one thing that you should know, and this is the guideline. But remember, any income generated from these gifts received is subject to tax. Lastly, with proper planning and budgeting, you can actually save some cost on your wedding too.
If you don't plan to call 10,000 guests at your wedding, you can actually do an intimate destination wedding anywhere in India at the same cost or even lesser. You should also keep checking the prices of gold and buy it when it is cheap. If you know that you're going to get married soon, this is something you can do. If you choose an off-peak season and in-season flowers, you can also save on some costs. If you're not a big fan of designer lehengas, you can save cost by renting a wedding dress, because admit it, when will you even wear that heavy lehenga again? Make all your bookings early and consider doing a weekday wedding, because that's usually cheaper. Lastly, definitely consider taking a wedding insurance, because it helps cover costs if something goes wrong at your wedding. And if you start investing little by little now through SIP or mutual funds or even a fixed deposit, if you have a goal, which is wedding in this case, you can actually have a great corpus for your wedding, say in like 5 to 10 years. I mean like a wedding fund. So that's it. Here's the checklist. Number 1, check for government schemes. And if you fit in any of these. Number 2, see if you can generate cash out of your guests. Number 3, use your wedding gifts wisely. And number 4, plan it properly and before time. And if this video was some help to you, like, share and subscribe to ET Now for more such videos, news and views. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.